Hello, Mathuja, and watching Morning Post on HornbillTV. Reacting to the resignation of PJP leader K. Annamaliya, Tamil Nadu PJP spokesperson Narayanan Tirupati acknowledged Annamaliya's significant contribution to the party's growth in the state, saying that his role could not be denied. However, Tirupati stressed that the PJP's progress would continue, noting that the party functions under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and is driven by a continuous political progress. He expressed confidence that other leaders would also emerge to contribute to the party's expansion and organizational strength in Tamil Nadu. While his contributions to the party in Tamil Nadu cannot be denied at all, it doesn't mean that there will be no one to contribute more also, because Mr. Annamaliya came to our party 4 or 5 years back, and he has been contributing heavily. He has done very well, but BJP is a party, the world's largest party, under the dynamic leadership of Mr. Narendra Modi. So things will, it is a continuous process. Politics is a continuous process, and we have infrastructure throughout India. And Tamil Nadu, we have done better also. We have been there. In fact, I am there for almost 40 years. So BJP will not see anything as loss. We welcome everyone into the party. We don't want anyone to leave the party. But if somebody decides to go out, it is their prerogative, will and wish. It is not going to affect the party at any cost. What and where was this contradiction happened, sir? Like, were you? No. See, that's what I said. That is his wish. Anyone, we may have some certain policies. It is a national party. Somebody has got the difference. They are entitled to have their own opinions. Absolutely not. BJP is a collective party with collective leadership, and we are a national party. So absolutely, you may have difference of opinions or differences, but you should you should try to fight within. But when you are not able to fight within, yes, you choose to go, you choose to leave, up to you. So we cannot stop. But we wish them good luck, because he is a very good personality. He is a very good person, very active, dynamic leader. Absolutely, there is no doubt at all. He is a very good friend of mine. In fact, I have been a vice president under him. So, but that is not going to affect the party. Maybe temporarily, media may say that a person who is popular has gone, but BJP is not grown, not over anyone's popularity, but by its organizational structure and the growth-oriented, people-related, people welfare programs. So it is a party with conviction. Responding to a question on the government's disinvestment program and the strong investor response to public offerings of Coal India, NHPC and Central Bank of India, World Bank Executive Director for India, Nilkant Mishra, said that the Reserve Bank of India's dividend payout was broadly in line with budget estimates and did not come as a significant surprise. He noted that the government had established and funded an economic stabilization fund last year, which continues to provide fiscal support. Mishra added that the centre is carrying on additional burden of around 1 lakh crore towards fertilizers and oil subsidies this year, a cushion he believes would sustain subsidy requirements for another month or so. RBI dividend is in line with what was there in the budget, so I don't think there's a very it's a big positive or a negative surprise. So I think that's what was there in the budget, maybe slightly higher than what. So that by itself is not going to suffice. The government had created an economic stabilization fund last year and funded it. So there's about 1 lakh crores extra they're carrying this year for the fertilizer and oil subsidies, which I think can last for another month or so maybe. So after that, then their interventions need to fall, meaning fiscal interventions need to fall. It is too early to start thinking about what adjustments need to be made, because frankly this is we don't know where the nominal GDP is going to end up. As a result, where will GST collection end up? What will happen to income tax collections, corporate tax collections? We are 2 months into the year, so so to start expecting big changes is unwise. On the growth side, I think RBI's forecasts are too conservative. I think the economy is doing far better than what they're building in.
But that's the difference, I guess. When they have to be the official forecaster, they may be slightly more conservative. Our expectation, our assessment is that the economy was growing at almost 8% in the Feb-March period. Because of the oil prices going up and some headwinds, it has corrected, it has slowed down a bit. Our current rate would be closer to 7% or maybe slightly below. But as the year progresses, and if the oil markets are right, and we say end the year at $80, we may be accelerating above 7%. So I think that, car sales growth of 29% in the month of May, strong cement volume growth, strong credit demand growth, strong mall sales growth, mall footfall growth, all of the strong credit demand. I mean, all of these are very strong signs. The economy is doing very well. Lastly, on disinvestment front, the government has met the Coal India, Central Bank, NHPC are great success. Do you think how much money they can raise? LIC and IDBI Bank is in the pipeline. Yeah. How much money they can raise from this? Do they meet the target? The more they do, the better for us. It helps on the fiscal side. It gives a very strong signal to the market that the government is serious about privatization. And what it also does is makes the market overall slightly cheaper. See, so one of the reasons, while there are many reasons why FPIs have been selling steadily, one very important reason is India's relative price to earnings multiple is not cheap enough. Now, what can happen is that you have the government starts selling, and that, it's like always a demand supply for equity, right? So if the supply of equities is faster than the demand, higher than the demand, then prices remain under control, and the market sort of comes to a level where they say, wow, it looks interesting. So this is a healthy way to cause or bring back the FPIs. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. The growth is coming mainly from government capex. Indian stock markets retained their gains following the Reserve Bank of India's latest monetary policy announcement and measures aimed at supporting the rupee. Market expert Sharad Kohli said the RBI government and the Monetary Policy Committee kept the policy repo rate unchanged at 5.25% in line with market expectations. Kohli noted that the central bank also maintained its neutral policy stance, indicating that it is keeping its options open for future actions depending on evolving economic conditions. He added that the decision provided stability to the markets and reassured investors amid ongoing economic uncertainties. As expected by me personally, the Reserve Bank of India Governor and the Monetary Policy Committee decided not to change the repo rate. So the rate remains at 5.25 with the stance being kept as neutral, which means that it is keeping the options open for future. He did expect challenges as far as the times to come are concerned, that the supply disruptions and energy prices, they remain a big challenge because the GDP growth has been revised downwards from 6.9 to 6.6 and inflation has been revised upwards with FY27 inflation closing at 5.1% is the expectation which the RBI governor announced. And obviously the markets were a bit confused as to how should they take this, because on one side when there was no change in the rates, that augured well, but then the commentary in the market wasn't taken very well, because the commentary is not all that optimistic, although the parameters of Indian economy have been expressed to be very good. But then India cannot remain untouched and unfazed from the challenges coming from across the world. So it was a commentary which has not gone very well with the market. Because of that reason, we see the markets trading lower at this point of time, and the markets are under pressure, either whether it's Nifty or Sensex. Let's see how it closes when the market comes to the end of the session. The most important MPC meetings headed by the chairperson, who was the governor of RBI Bank. RBI governor has decided to hold the interest rates along with his committee members at 5.25%. MSF and SDF rates also remain stable. Now, what is the reason for this rate stability, for holding the rate constant? Is obviously there are supply side issues which is coming, or which is born out of the geopolitical tensions in the Middle East. Inflation has started taking an uptick. Initially in the month of March and April, food prices were impacted, but fuel prices were not impacted. But as the fuel prices started ticking northwards, it has also started impacting the inflation. The inflation expectations for FY27 has shot up from 4.6% odd to 5.1%.
this will also impact the GDP growth rates expected basis for FY27. So from 6.90% RBI estimates it would now, they are now expecting that the GDP would grow at 6.6%. And welcome move that has come from the Government of India via RBI announced in this meeting is that for government securities, for FPI, via the FPI route, there is no tax. So it is tax exempt, which is acting as a market sentiment booster, obviously because there will be inflow of funds from the FPIs and there is no tax on that. But via the government securities route, that means also we have access to capital for development work. Now, what are some of the sectors which will get positively benefited out of this? So one is obviously the banking sector, where there is stable loan growth projections and predictable margins also for NBFC, because the borrowing cost and lending spreads do not change, and hence there will be some amount of visibility. There will be no drop on the net interest margin, which happens because of cut in the interest rate. IT sector, which is quite interest rate sensitive to the interest rate cut, does not get a booster right now, so that the outlook remains there neutral. Real estate and automobile sector, which would have ideally benefited because of an additional boost on the demand because of the interest rate cut, does not benefit directly. But the good point is the RBI governor has spoken about resilience in the manufacturing sector and in the service sector, and the long-term growth of India remains very, very intact. So this is all for now. I think this is one of the most important meetings. The India Inc. had been waiting for it, and the Global Inc. had been waiting for it, and a gift for FPI via the GSIP route. PDP President Mehbooba Mufti visited the AIIMS construction site in Awantipura and expressed satisfaction over the progress of the project, describing it as a dream initiative of her late father, acknowledging that the project had faced delays due to various reasons. Mufti said the construction work is now moving forward steadily. She assured that the project team offer full support and stated that she would raise any pending issues with the Union Health Ministry if required to ensure the timely completion of the premier healthcare institution. आज यहाँ ये जो अवंतीपोरा में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तामीर हो रही है, मुझे आके बहुत खुशी हुई। मेरे वालिद मुफ्ती साहब का ये ख्वाब था और वो याद ताज़ा हुई। और हालांकि इसमें कुछ देरी हो गई और कुछ वजूहात थी, पर अभी अच्छी तरह काम चल रहा है और मैंने उनको पूरा यकीन दिलाया कि जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें यूनियन होम हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करना पड़ी तो हम उनसे भी बात करेंगे। पर ये इंस्टीट्यूट, इसकी मुझे सबसे खुशी ये है कि आपने देखा हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हेल्थ के हवाले से बहुत मुश्किलात हैं, खासकर कैंसर फैल रहा है और इसमें रिसर्च का भी एक अपना एक हिस्सा होगा और डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट, नर्सेज की रिक्रूटमेंट, और उससे मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट जो बन रहा है ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक मिसाल बनेगा, क्योंकि आपने देखा कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ आते ही मुझे लगता है पेशेंट तो इस माहौल में ज्यादा बेहतर फील करेगा। और साथ ही मैंने इनसे ये गुजारिश भी की कि जो रिक्रूटमेंट होगी, जो नॉन प्रोफेशनल या नॉन टेक्निकल होगी, वो अवंतीपोरा और इसके जो एडजेसेंट एरियाज है उनको उसमें तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जमीन जो है आपको पता है कि ये जगह अब सेंट्रल बन जाएगी पूरे जम्मू कश्मीर के हेल्थ के हवाले से। और यहाँ मुझे लगता है लोगों का जो इतने सारे डॉक्टर, इतने स्टूडेंट्स वगैरह, मुझे लगता है अवंतीपोरा जो है बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ लोगों को थोड़ी कंस्ट्रक्शन के हवाले से थोड़ी मुश्किलात है कि 500 मीटर तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं। मैंने सुना वो भी कुछ देर के लिए थी। मैं उसके लिए भी डिविजनल कमिश्नर साहब से बात करूंगी कि ऐसा लोगों को, एक तरफ से दरिया है, दूसरी तरफ से हम रुकावट करेंगे, लोगों को मुश्किलात होंगी। पर ओवरऑल मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, क्योंकि मुफ्ती साहब का ख्वाब था एक यूनिवर्सिटी का, वो तो बन चुकी, वहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं। अब ये है तो इंशाल्लाह मुझे लगता है 1-2 साल में ये भी मुकम्मल होना चाहिए और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ से फायदा मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ बड़े ही काबिल जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, डॉक्टर बनेंगे, नर्सेज का काम करेंगे, उससे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा।
On the occasion of World Environment Day, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav extended his greetings to the people of the state and the nation and announced the launch of the large-scale tree plantation campaign from June 5 to June 21. He said the initiative coincides with the completion of 12 years of Prime Minister Narendra Modi's tenure and reflects the government's commitment to taking welfare and development programs to grassroots level. Yadav also praised the Prime Minister's dedication to environmental conservation, stating that Madhya Pradesh remains committed to advancing green initiatives in line with the vision. आइए जी, विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी 5 जून से लगा 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाने का एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ, ये उनके सफलतम 12 वर्ष के शासनकाल के बलबूते पर जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का जो निर्णय है, और ऐसे में पर्यावरण के प्रति तो उनकी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में और ज्यादा उल्लेखनीय है। हम सबको मालूम है कि चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अगर शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ है, उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए चीते धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्बसाहट का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए। ऐसे एक नहीं सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से लगा करके हर क्षेत्र के लोगों के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब, हर वर्ग के कल्याण के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से उनके काम चल रहे हैं, मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। सफलता शासन के 12 वर्ष पूरे करते हुए आगामी शासनकाल के सहित 2029 में वो पुनः अपनी इसी प्रकार की सत्ता संचालन की सुविधाओं के साथ देश की सेवा करते रहे, ये मैं कामना करता हूं। बाबा महाकाल निश्चित रूप से इनको सफल करेंगे और भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी। उनके माध्यम से हमारी सरकार भी यूनियन कार्बाइड जैसे एक बहुत 40 साल पुराना एक कठिन और कई प्रकार का काला प्रश्न भोपाल और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए था, जब पर्यावरण को चुनौती देते हुए कारखाने को संचालन करने दिया गया। संचालन करने के बाद हुए परिणाम के बलबूते हजारों लोग मारे गए, लेकिन उस काल में न तो कारखाने वाले को न कारखाने से जवाबदार लोगों को कोई दंडित किया गया। हजारों लोग काल कवलित हो गए, कई लोग अपाहिज हुए, कई प्रकार के कष्ट लोग सहन करते हुए गैस पीड़ितों के नाम से जाने गए। हमारी सरकार ने उस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यूनियन कार्बाइड स्थल को स्मारक के साथ कई प्रकार से भोपाल के विकास में उसका योगदान देने के साथ उस काल के उस कचरे को जलाने का माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने का भी एक उत्कृष्ट कार्य किया, जो सरकार के सुशासन के सिद्धांतों में हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता भी आती है। काल के उस गलती के कारण से भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके प्रबंधन भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी वन्य संपदा, जैव संपदा, खनिज संपदा और पर्यावरण हितैषी नीतियों के कारण से देश भर में मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बन रही है। हमारा पर्यटन का क्षेत्र लोगों को रोजगार दिलाने में काम कर रहा है और ऐसे कई कामों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार इस समूचे पखवाड़े को भी मना रही है। लेकिन आज तो पर्यावरण दिवस है, मेरी अपनी ओर से पर्यावरण प्रेमियों को, प्रकृति प्रेमियों को। Reacting to Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi's recent remarks, Pushkar Singh Dhami launched a sharp attack on the Congress leader. Dhami said that Rahul Gandhi's statements are not taken seriously by the people of the country and claimed that despite repeated efforts by his party to project him as a national leader over the years, he has failed to establish himself politically. अरे भाई, आप लोग राहुल गांधी की तो इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, देश के अंदर कोई उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेता। आप तो जानते हैं वो कब क्या बोलते हैं, उनको शायद पता भी नहीं होता है कब क्या बोल दिया, कब क्या कर दिया, देश की बात कब वहाँ क्या बोल दी, हमारे सैनिकों के बारे में कब बोल दिया। पहले एक समय था कि जब राहुल जी आए थे राजनीति में नए, उनको पार्टी उनको लॉन्च करती थी, बार बार लॉन्च करती थी, री लॉन्च करती थी, लॉन्च करते करते कई साल हो गए, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। सैनिकों के बारे में जिस प्रकार से बोलते हैं, क्या उत्तराखंड के लोग उनको गंभीरता से लेंगे? क्या सेना से कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगेगा, सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम पर कोई जो है सर्टिफिकेट मांगेगा क्या? वो विदेशों में जाकर भारत की जिस प्रकार से मजाक बनाते हैं, जिस प्रकार से देश का अपमान करते हैं, वो इतने आगे निकल गए हैं कि वो हम लोगों का विरोध करें, मेरा विरोध करें, प्रधानमंत्री जी का करते हैं, अन्य हमारी पार्टी का करते हैं, सरकारों का करते हैं, वो एक समझ में आता है। लेकिन वो करते करते सेना का विरोध करने लगे, उसके बाद जो है देश का विरोध करने लगे,
हैं। उनकी पार्टी, हमारे जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड के सपूत थे, पूरे देश को उन पर गर्व है, पहले CDS थे, उनके बारे में किस प्रकार की अमर्यादित भाषा उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा की गई है, कौन भूल सकता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में Responding to allegations of various reported association with the Cockroach Janta Party, Manoj Jha clarified that his involvement was limited to facilitating a venue for a press conference at the request of the individuals known to him. Jha said he has routinely extended similar assistance to various civil society groups over the years and accused sections of the media of drawing conclusions without verifying the facts. He also reiterated that he has previously refrained from supporting movements whose ideology he believes lacks clearly. नहीं, आपने मेरा लेटर देखा। अगर आप मेरे लेटर का मजमून पढ़ेंगे जो आपके समक्ष है, एक जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैं सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ था और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कलीग्स जो मेरे सीनियर हैं, मैं हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा उनको एक इवेंट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नथिंग एल्स। तो मैं तो अमूमन करता हूं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी सिविल सोसाइटी के लिए करता हूं। आप में से कई पत्रकार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं वेस्टर्न कोर्ट के लिए आप रिकमेंड कर दीजिए, स्वर्ण जयंती के लिए अभी शरद यादव जी का एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है। कई पत्रकारों की फैमिली में शादी होती है, वेस्टर्न कोर्ट के लिए कहते हैं, तो उसके लिए करते हैं रिकमेंडेशन। अमूमन प्रतिदिन रेलवे रिजर्वेशन प्रतिदिन पत्रकारों के भी होते हैं और एम्स की चिट्ठियां। तो मुझे बताया गया कि एक उनको इवेंट करना है और वो चिट्ठी है, क्लियर कट ये चिट्ठी कह रही है। हाँ, और उनको मैं जानता हूं। मुझे उसके बाद जब शाम को विजुअल्स आते हैं तब मुझे पता चलता है और मैं देख रहा हूं कि कई मीडिया के साथी बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किए, बिना इस चिट्ठी के कंटेंट पे नजर डाले हुए मोटिव एट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं क्या ही कह सकता हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक जीवन में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ही अगर मेरे पुराने रिकॉर्ड्स देख लीजिए तो कितने ही सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्शा पुलर्स, ऑटो ड्राइवर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, मैं सबके लिए करता रहता हूं। सुलभ हूं, लोग अप्रोच करते हैं और उसके बाद तो मैं समझता हूं कि इस पर कम से कम मेरी ओर से पटाक्षेप माना जाए। नहीं, उनके देखो, जिस भी फेनोमेना का वैचारिकी स्पष्ट ना हो, इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। जो 12-13 में आंदोलन हुआ था उस वक्त भी मैंने लिखा था कि इस तरह के आंदोलन जिसकी वैचारिकी स्पष्ट ना हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं। किसी भी एंटिटी के लिए, किसी भी घटना परिघटना के लिए वैचारिक रूप से आप क्या सोचते हैं, फ्रीडम पे आपकी सोच क्या है, इक्वालिटी पे आपकी सोच क्या है, जस्टिस पे आपकी सोच क्या है, सोशल जस्टिस पे आपकी सोच क्या है, सेक्युलरिज्म पर आपकी सोच क्या है, जब तक इस पूरे बास्केट का अध्ययन ना हो तब तक हर चीज को मैं समझता हूं टिप्पणी करना और ये डिजिटल फिनोमेना ही बन के रहेगा। आगे वो आपसे सपोर्ट मांगेंगे तो देंगे आप सपोर्ट? उन्होंने तो कल भी सपोर्ट मुझसे नहीं मांगा था। कम से कम इतना तो हुआ कि अब आगे कोई मुझसे अप्रोच करेगा कि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं तहकीकात कर लूंगा किस बात के लिए चाहिए। नहीं, देखिए, अब ये चीज इस आजाद मुल्क में इतना चीज रहने दीजिए। उन्होंने मुझको अप्रोच किया, मुझसे चिट्ठी ली, उसके बाद उन्होंने वहां प्रोग्राम किया। वॉज इट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल? तो वो अपनी उनके और हमारी एजेंसीज के बीच का मामला। That's all we have for now. Keep watching HornbillTV.